Now okay, see, conservative non-conservative force animation data, right? Conservative and non-conservative forces डिस्कस करते हैं तारीख and पे the कथा force कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम जान छो वर्क डन इज बेसिकली f डॉट s, राइट? equals जहाँ look at the पाएंगे work क्लोज्ड done. पाथ रे वर्क डन 0 सेटाला कंजर्वेटिव फोर्स, जहाँ पाएंगे क्लोज्ड पाथ रे वर्क डन 0 नुहे सेटाला नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जांपल भाभी जे एटा जो अछि ये ए पाथ ट्रैवल करी जे केडी पहुंच तो ए तरे एमती जाउ तो यार वेलोसिटी रो दीटा कंपोनेंट आसीबो. Consider So an data object component. taken from point A to point B along the curve with the work done by gravity from a point. See 18 गोटे आसीबो cos थीटा गोटे आसीबो sin थीटा जो कोडी को फोर्स अंडर जाउ सेटा ग्रेविटेशनल फोर्स सेटा कोडी तळकु तो तले सेटा ग्रेविटेशनल फोर्स ता तळकु ताहले जो डिस्प्लेसमेंट रो दीटा वेक्टर आसला cos थीटा हो sin थीटा तार cos थीटा पई कि किछ वक्तन हबो कि वक्तन हला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट f डॉट s f s cos थीटा cos केते 90 डिग्री हिजो एटा एमती हे गला एटा तळकु फोर्स ता ट्रायंगल विथ एंगल केते हो 90 cos 90 केते 0 ता माने यार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे वर्क डन केते हो और खाली वर्टिकल कंपोनेंट जो ही वर्क डन हो तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो ही खाली वर्क डन हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हो नहीं बुझि पेल जेतले एमते होची तीटा कंपोनेंट असला cos थीटा हो sin थीटा फोर्स तो तळको ही पडची वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स ता तळको दैट मींस या संगे 90 डिग्री ही जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तार हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन से तार खाली को कंपोनेंट में वर्क डन होछ ना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन होछ तार खाली हाइट ऊपर डिपेंड करछ तो केमती भी जाय खाली 8 होती 80 पहुंच तो 80 पहुंच तार पर डिपेंड रिगार्डलेस ऑफ द पाथ टेकन टू रीच देयर खाली हाइट डिफरेंस ऊपर डिपेंड करता तार डिस्प्लेसमेंट इज फॉर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल व्हाट क्लियर Point P on the curve. dr is the summation of its displacement along the x-axis dx and its displacement along the y-axis dy. क्लियर तो data component कोन dx गोटे आउ dy गोटे for what component there is work done only for the dy component dx में के work done केते 0 because force पड़ियो तो जो फोर्स में के मैं वर्क डन काट दे सेटा पड़े तो एनालिसिस ता देख दियो लगी दु फोर्स में के वर्क डन हम बात करछ सेटा तो that means look here mg ना a force में so for this force a angle टा केते 90 degree but a angle टा केते 180 degree तो यहाँ पे की वर्क डन हो but यहाँ पे वर्क डन कौन 0 a displacement पाएंगे for this displacement along x-axis work done is 0. What is the meaning of this? Conclusion is that here the work is only dependent on the vertical component of the displacement regardless of the path taken. Work is only dependent on the vertical component of the displacement. Work done is only dependent on the vertical component of the displacement regardless of the path taken. Regardless of the path taken. कोई भी पाथ रे जाओ खाली वर्टिकल कंपोनेंट जो ही वर्क करना एदी कथा क्लियर. तो बाय डेफिनेशन व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट बाबा पहले सत्य
बट ना बाबा तुम मन को जो डेफिनेशन लिखिबार अछि दैट डेफिनेशन विल बी जो फोर्स पाइकी गोटे क्लोज्ड पाथ रे वर्क डन इज 0 सेटा हला गोटे कंजर्वेटिव फोर्स so a type of force for which the work done around a closed loop is 0 okay the type of force for which work done around a closed loop is 0 અને गोटे क्लोज्ड लूप रे ट्रैवल कर जो स्टार्ट कलो सेठी पहुंची ताहले तोर वर्क डन जदी 0 ताहले सेटा कंजर्वेटिव फोर्स रिगार्डलेस ऑफ द पाथ केमते भी जायता बट जदि तोर पाथ ऊपर डिपेंड कला जेमते कि फ्रिक्शन तो जिबु वर्क डन हबो आसीबु वर्क डन हबो 0 हबनी वर्क डन बटन तो कोना हबो जिबा पे जति गेला से हमें जति गेला बट ग्रेविटी रे कोन तू थोड़ा इमति स्टार्ट करू इमति गलो गुल्लू 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 पूरा सेठी पहुंची ता माने तू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किसी भी करू 0 मतलब क्लियर Gravity acts along the y-axis, so work done by gravity dwg वर्क डन बाय ग्रेविटी केते हिजो ना f डॉट dx dx माने दीटा कंपोनेंट अछि is minus minus mg dy हबो तना एंगल इज 180 डिग्री बट i कैप में वर्क डन हबो कोन 0 राइट बुझिबली कथाडा एतके हबो कथा एडी तुम्हें एको एक्सपेंड करके लिख परिबो जदि प्रूफ करया पे कहबो हाउ विल यू प्रूव इट सी dw is equal to f dot dx d आमे एटा को ds नै जबा बिकॉज़ x और y data component नेचर राइट so what is ds ना dx i cap plus dy j cap ता माने f dx i cap और f dy j cap ना फोर्स को एंगल रे पड़छि माइनस j cap फोर्स को उधर पड़छि माइनस f j cap थैंक यू ए तळु पड़छि बा एटा x एटा y if this is your not visible if this is your x and this is your x and this is your y then this will be your I cap and this will be your I cap and this will be your J cap the force is तळु पड़छि माने माइनस J cap ता माने एटा को जो F J cap लिखि जेटा को माइनस mg J cap लिख करबी लिख करबी माइनस mg J cap डॉट dx I cap डॉट माने डॉट माने कोन cos थीटा mg J cap dx I cap cos थीटा प्लस mg माइनस mg J cap तो माइनस mg J cap dy J cap cos theta now tell me here theta केते I J के भीतर एंगल केते 90 तो here cos 90 ର वैल्यू केते 0 एठी एंगल केते 180 here एंगल इज 180 जदि मु माइनस नहीं गली जदि मु एटा को माइनस J cap नहीं गली तो एंगल टा 180 टा कोन लिखबी cos 0 लिख देबी तो लिखबी cos 0 बिकॉज़ कारण हम f टा को माइनस J cap रे नहीं चले सेम डायरेक्शन है तो कहीं जो cos 0 केता बड़ी माइनस mg dy माइनस mg dy एटा पड़िबो और ए पार्ट कहीं जो ना 0 है तना एंगल भीतर एंगल केते I क्रॉस I डॉट j ता 0 ना I डॉट j ता कोन 0 मैथमेटिकली प्रूफ then m h b is तो फॉर स्मॉल वर्क डन माने 8 रति के वर्क डन पे इनफिनिटली स्मॉल तो टोटल वर्क डन को है जो ना जोठू जो जाय जाई छ अच्छा कोठ को जाय गलो ना खाली तो y ऊपर डिपेंड कला कोन छ dy अछि त माने y रो इनिशियल और y रो फाइनल y रो इनिशियल थला एटा y रो फाइनल हला एटा मोर त क्लियर y1 माइनस y1 एटा हो y2 y2 ने की y1 और integral of minus mg dy from y1 to y2, which is equal to mg into bracket y1 minus y2. एटा y2 एटा y1 ध्यान दियो को टू को जाय कलो
ना y2 ରୁ ନେଇକି y1 पर्यंत कोड को जाएंगे वर्क डन कला फाइनल माइनस इनिशियल ना तो एटू स्टार्ट करिवो एटू सारिबो एटा को नेछि y1 एटा को नेछि y2 तो y1 ରୁ नेकी y2 पर्यंत टिके एपर सपोर्ट लिखि देला एटी से एटा कोन हबो y1 ରୁ नेकी y2 पर्यंत एटा भी हबो y1 ରୁ नेकी y2 पर्यंत एठी हबो y1 ରୁ नेकी y2 पर्यंत ता माने y2 - y1 bracket closed. बट जेतले माइनस साइन टा भितर नै सेटा कोन हिजो y1 - एटा को करै दोछि टिके बल से टिके भूल अछि तो सेटा गोटे भाग ध्यान दबो कोन कहू छु कोन भूल अछि टे भूल अछि या कि y1 y2 उल्टा लिख y1 y2 उल्टा लिख let us take this सी एटा y1 मोरो एटा मोरो कोन y1 एटा मोरो y2 राइट तो y1 ରୁ नेकी y2 जाएंगे तो एटा कोन हबो y1 ରୁ नेकी y1 ରୁ y2 एटा कोन y1 ରୁ y2 mg dy हेले dy टा कोन हे जिवो y हे जिवो y कोट को जाएंगे y1 ରୁ नेकी y2 तो एटा हबो कोन y2 - y1 दैट इज इक्वल टू केता हबो mg minus mg y2 minus y1 माइनस भितर नै गेले कहि जो y1 minus क्लियर होला ता माने तुमको जणा पड़ला कोन जेहेतु अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क डन होची तो इनिशियल माइनस फाइनल नॉट फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल गेले माइनस साइन देखियो माइनस भितर नै गेले कहि जो इनिशियल माइनस इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट माइनस फाइनल वर्टिकल initial height minus final height change in height is equals to initial height minus final height clear तो खाली height जो नहीं हो ओके I1 on the shape. So it can be तो किमती विचार वो भी पाथ नहीं विचार समझेगा वर्क डन को said that irrespective of the path between points A, mg whole into so y1 minus it can be said that regardless to केमती जाउ does not object matter points. So it can be said clear that वो भी बात है any path you take the same vertical component the same work done what is the work done work mg whole into change in height mg whole into change in height change in height is basically initial height minus final height o height vertical ना height माने vertical component any path you take your work done for this all are going to be same right that is equals to mg whole into y1 minus y2 where y1 minus y2 is equals to change in height is what change in height yes सेटा में कंसीडर करना আমি খালি वर्क डन ପାଇଁ बात মানে খালি ग्रेविटी ପାଇଁ की वर्क डन बात ओडी का ପାଇଁ खाली गोटे फोर्स ପାଇଁ वर्क डन जेते बेले हमें वर्क एनर्जी थ्योरम पढथिले सेठी नेट फोर्स पे वर्क डन मारते सेठी कोन करथिले नेट फोर्स राइट का नेट फोर्स टा ही जति के वर्क डन होबो सेति के ही तोर एनर्जी कन्वर्ट हो काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरी कोन कहला द वर्क डन बाय द नेट फोर्स acting on a body is equal to the change in the kinetic energy of the body the change in kinetic energy is net force पे वर्क मतलब क्लियर एठी हमें नेट फोर्स को देखना एक कौन देखछे ई फोर्स टा कंजर्वेटिव की ए फोर्स टा कंजर्वेटिव यस बिकॉज़ तू ए टू जाएगी बुली की पुणी आसी सेठी पहुंचले तो वर्क डन जीरो तने
closed path रे work done 0 thele ame कहबा that is a conservative force. So what is a conservative force? A force for which work done around a closed path is 0. That irrespective of the path between points A and B, work done by gravity is the same. If the object is brought back to A through another path, as the initial and final positions remain the same, the total work done is 0. Such forces whose net work done in a roundabout motion is 0 are called conservative forces. Work done by a conservative force is independent of the path taken. Work done by a conservative What is a conservative force by definition? Conservative force by definition. Gravitational force, the conservative, elastic force, spring force, that are conservative, right? But a closed loop, right? Zero. Set up in the a force for which loop, for which work done is 0 around a closed bar roundabout motion. Here, a force for which work done is 0 around a closed. Okay. Now, the conservative force, जहाँ पे work done 0 नहीं, and who is that force? The friction. force is अच्छा आप बोले पहले कौन ना ये path ऊपर depend कर independent of the path taken. Conservative force is it is independent of the path taken. Path ऊपर depend करेगा. Fine. independent of and electric force, gravitational force, spring force, and electric forces. Gravitational force. Gravitational force कौन कौन conservative वाला? आगे gravitational, elastic force, spring force. Elastic force नहीं, spring force. How? Electrostatic, electric force. अच्छा electric force टा केमिति conservative जिसमें कहबे कि proof that electric force is a conservative force. तामाने तारा गोटे closed loop रे work done 0 वाले केताड़ा ଆଉ conservative closed loop रे work done 0 वाले closed loop रे work done 0 वाले तो गोटे positive charge टे एठी अछि आ गोटे positive charge टे रखिल ताको धक्का देबो तो ताको against the force ने बा for the force को force electrostatic force ताको करले अछि रिपेल करिवो दूर को नेले रिपल्शन कमी जीवो तो कोन बोलो 8 हो यार कि नेले पुणी सेठी के तो वर्क डन 0 जोड नेलु सेडु को पछु नेलु तो सेडु को सेठी के ताने क्लोज लूप हला तो वर्क डन केता 0 जदी वर्क डन 0 हला ताले सेटा गोटे कंजर्वेटिव जदी वर्क डन 0 हला नहीं तो सेटा गोटे कंजर्वेटिव फोर्स. So if you are asked to prove if a force is conservative कौन करिवो ना बाहर करिवो क्लोज लूप रे वर्क जो पॉइंट स्टार्ट करतला पुनी सेही पॉइंट आने की तमे खत्म करिवो तीनटा पॉइंट नला ए बी सी डी तीनटा पॉइंट नला तो तीनटा पॉइंट रे कोन हबो ए बी सी डी रे ए टू बी टू सी टू डी पुनी डी टू सी टू ए एमती करिवो तो सब तक वर्क डन मिस्टर केते बारला 0 then that is what conservative force. Clear? Electric force, spring force, conservative electric force agona spring force force about motion. Forces, gravitational force, spring force, spring force and electric forces
टेंशन टा कंजर्वेटिव ना नॉन कंजर्वेटिव टेंशन टेंशन केतले ऐड करे गोटे सूता जो ऐड करे ना हां क्लास नहीं है 8:30 ଅଛି ଏରିଆଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର 10 କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଓକେ ମୁଁ ଜାଣିଛି कोण कार्डटा विशाल को कॉल करे सी भी आसीबो ताकू ता कार्ड्स दे दो कॉल करो से आसीबो तो कि भाईनंकर क्लास अछि ताको बदल रे मु आछि आ कार्ड्स नबा पेंगी आपण आसंतु रे रवि टॉकीज मु कार्ड्स आपण को देबी मु कार्ड्स लेके आसीबी यस आमने मु से मैसेज पढ़े जाओ आज्ञा सर दर्शन सर आसपारिबेनी आ मु तांको बदले आछि जाउछि रवि टॉकीज आपण आसंतु रे आपण कार्डटा आपण को दे देबो अच्छा कॉन्फ्रेंस में जी कॉन्फ्रेंस हम घर आडी के रवि टॉकीज भाई रवि टॉकीज सूतारे वळे कोन सूताडा तू भिडी परछ तळकू ताले सेटा टेंशन फोर्स रहले सेटा इलास्टिक फोर्स है वासले देखो मोबाइल ओ से टेंशन फोर्स स्प्रिंग सूताडा के भिडी परछ ताले सेटा को इलास्टिक फोर्स है सेटा नो टेंशन माने सूताडा भिडी होगी सूताडा भिडी देले कोन हो गइल भिडी गेला इलास्टिक फोर्स चेंज हो गेला फोर्स टाइप चेंज हो गेला सूताडा खाली थिबो एमि सेटा तोर टेंशन you cannot change its length set के वर्क डन अराउंड अ क्लोज लूप कोन से फोर्स पे तो वर्क नहीं परिबनी टेंशन पे की वर्क केम जो तब मूव कर लेता हो ये भाई तब आबेंग तो होगा अब टेंशन तो एमि जदि तो ऊपर को नेलु ताले टेंशन पड़ी भाई बंद दिजु कारण टेंशन ना पड़िबो तो लखी रहबो तब टेकी दिलु ऊपर तो सुता ऊपर आ किछ पड़ला नहीं फोर्स टेंशन ही रहला राइट अच्छा आउ गोटे को भाबो देखो और फोर्स जोड़ा कि कंजर्वेटिव कि नॉन कंजर्वेटिव केते फोर्स स्टडी करलेनी हम राइट नॉर्मल नॉर्मल जो फोर्स ता छी से नॉर्मल फोर्स ता पड़ेटा ओडे नॉर्मल ता ओडे रिएक्शन फोर्स जोटा कि वेट जो आसे जोटा कि कहा जो आसे वेट जो आ सेटा आसे केतळे तले गोटे ऑब्जेक्ट उनी गोटे सरफेस ऊपर रखो आ तो वेट ता बैलेंस हो फॉर एग्जांपल ए जगह रे नॉर्मल नाही ए जगह नॉर्मल अछि ए नॉर्मल काहे नहीं कारण तळु बोलची गोटी अछि वेट एटासी पडिला एबे ये ऊपर तळु को मूव करलानी तो वेट रो गोटे नॉर्मल फोर्स असला जोटा कि रिएक्शन फोर्स जोटा से रखिला बैलेंस करी तो सेटा तो एक्ट करिबो सेटा जोटा सरफेस थिबो तो सरफेस रो टेकिलु कि तळु को ताहाल तो कोन हो ताहाल तो से नॉर्मली रहबनी तो सरफेस टेक दिलु तो नॉर्मली नहीं एग्जिस्ट कर सरफेस ऊपर रखलानी अछि तापर तो ताल सरफेस रे ही मूव कर परिबो बट सरफेस रे तो मूव करलो याडी कि याडी खाली नॉर्मल हो से मूवमेंट विथ एंगल के होला 90 डिग्री तो वर्तन जीरो वर्तन ए तीनटा फोर्स से तमरा कंजर्वेटिव और स्प्रिंग फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स चलो जाउछ माने एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ता कोन लगातार पडुची अन भाबिते ना पडना पूरा जो रोलर कोस्टर रो जो पाथटा माने इंजन लगे गाड़ी भीतर कार भीतर इंजन लगे ये कंटीन्यूअसली गोटे एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड और कांस्टेंट फोर्स प्रोवाइड एबे सेही फोर्स पाई के वर्क डन हवा दरकार बट सेठी टाणी बारो एनर्जी स्टोरिंग रो कांसेप्ट कुड अछि गाड़ी स्टार्ट करू गाड़ी नहीं गेलू पुणी आनी गाड़ी सेट रखी तो वापस जीरो माने इंजन ऊपर किसी प्रेशर पड़ला माने इंजन जति की तेल खाइता जति तेल
conserving the energy तामाने सेटा गोटे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स गाडी भीतर बसलु फोर्स जुआडे डिस्प्लेसमेंट से ऐड कलु बुलिलु पुणी आसिक पहुंच रिटर्न बट तर वर्क डन तो हैला ना वर्क डन तो सेट जे बुली के आसिक पुणी सेट पहुंचले पुणी वर्क डन तो हैला ना એટલે व्हाट इज दैट फोर्स अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स যদি वर्क डन जीरो होई थांता जेमिति गोटे इलास्टिक पिन होची छाडी देलु तापर से गला पुणी मन गस वर्क डन जीरो वाला देन दैट इज अ कंजर्वेटिव व्हाट क्लियर अच्छा ये बुझी पाइल ओके तो नॉन कंजर्वेटिव की गोटे मोस्ट एक भला एग्जांपल है कि Are example done of mass m that is moved very slowly through a distance d between very slowly माने तो फ्रिक्शन जति की फोर्स में मूव करछ move very slowly माने you are only giving that force which is required to overcome the friction friction force is equal to your force infinitely slowly move करछ रेगुलरली को फोर्स दोदी जति फोर्स दरकार है फ्रिक्शन को ओवरकम करे in points A and B in a straight line on a rough floor with coefficient of friction mu. The frictional force that exists between the surfaces is therefore mu mg. Friction, as you know, acts opposite to the direction of motion. Hence, work done by it is lost in the form of heat minus mu mgd. minus mgd कोन जेते डिस्टेंस को आनिलु पूरा क्लियर वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स हला mu mg डिस्प्लेसमेंट हला d जति बार तो आनिलु तापरे माइनस काई का एंगल हला 180 फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स पछकू तो नउचो याडे हला माइनस mu mgd डिस्प्लेसमेंट का एंगल हला 180. Now consider another situation where the object is brought from A to B very slowly along a circular path of path upre depend करछ तू इमिडिएट नबो जदी फ्रिक्शन पडला इमिडिएटली बस फ्रिक्शन पडिबो अधिक पडिबो एंड सब जगह इंटरेक्शन अलग अलग अब लेंथ का बड़ लेंथ राइज 2 पाई आर लेंथ का देजिबो तो पाथ upre depend कर of radius r. Frictional force along the circular curve is mu mg, and it is opposite to the motion of the object at every point. Hence, work done by friction in this case is minus mu mg pi r. तो पाथ ऊपर डिपेंड कला तापरे पुनी बुले गानी के सेम पॉइंट रखे भी तो वर्क डन जीरो होबा नाही so this is a non conservative r. Work done by friction is by the object between initial back zero, as friction acts on the object throughout the direction सेम था माने फर्दर फ्रिक्शन मूव करता था अब वर्क डन जीरो था पॉजिटिव था ना सीधा नेगेटिव था ना वर्क डन केते था बट जेहेतु फ्रिक्शन डायरेक्शन चेंज हो गेला तू तो पछु आड़ तो वर्क डन बॉडी का ऐड हो गया w1 plus w2 what are 2w1 होबो एटा होबो 2w2 और 2 पाई r टाइम 2 पाई r 2 पाई r पुनः उतर पाई r 2 पाई r d का डिस्प्लेसमेंट करो तो सेम फ्रिक्शन पे फ्रिक्शन तो चेंज होने काइनेटिक फ्रिक्शन बुझ पाला बुझो the path in a direction opposite to that of its motion are called non-conservative forces. When non-conservative forces are at play, energy escapes the system, mostly in the form of heat. clear okay so let me say
conservative and the or and mechanical. A force, what are we? It could be electrical or magnetic. मैग्नेटिक फोर्स भी थोड़ा कंजर्वेटिव फोर्स एटा मैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स समस्त कंजर्वेटिव मैकेनिकल माने जो काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटी पाएंगे. So what are we going to study? In terms of knowledge is a force. If Work done against the force in moving depends only on the initial and final position of the body and not on the path. the work only are three different separate from in math or cases, you are also picturizing the effort done by friction. He has several options. He could take the stairs which are at the back of the house, which are inside the house, or he could climb onto the parapet and jump down from here. In each of the cases, he travels different distances. Right? ଯଦି ସେ ପଛପଟ ସିଡ଼ି ନେଇ ଗଲା ତାହେଲେ ଏମିତି ବୁଲିକି ଯିବ ଭିତର ପଟ ସିଡ଼ି ନେଲା ତ ଏମିତି ସିଧା ଆସିବ ଏଠି ଯାଇକି ଏମିତି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ତିନିଟାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାଥ୍ ହେଲା ବଟ୍ ତିନି ଜଣ ପାଇଁ ୱାର୍କ ଡନ୍ ସେମ୍ ହେବ କାରଣ ଗ୍ରାଭିଟି ଅଣ୍ଡର ହେଇ କରୁଛି ଆଉ ସେଇଠି ପାଥ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କଲା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଇଟ୍ସ ଅ କନଜର୍ଭେଟିଭ୍ ଫୋର୍ସ କୋଡ଼ା ଗ୍ରାଭିଟି. For example, if he would go down and then travel all this distance to reach the car. He could have another option, in which case, from his position up here, he could go down to the inside stairs and through the house come out in this location to the ground. Is the objective in raising a body against gravity. We had in terms of the height that is from here to here. This is the picture that is given in the books. That is also kinetic force. For what is this between stationary charges? And it is capable of storing in energy. Supposing you've learned before. non-conservative force कौन ला यहाँ पे कि around a closed loop work done is not zero. That is a non-conservative force. टेंशन तो भाई मूवमेंट ही कर पाएगा टेंशन पड़ता है तो मूवमेंट कर पाएगा जब तू एमिदी करू टेंशन पड़िया बंद हो तो एमिदी आगु सुता छाड़ी जीव सुताटा इलास्टिक थिला तार सेटा टेंशन फोर्स रहलानी सेटा इलास्टिक फोर्स पड़ेगा स्प्रिंग फोर्स आएगा सेटा भी कंजर्वेटिव बट परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होवा दरकार बट बॉडीटा कौन होवा दरकार perfectly elastic. Perfectly elastic body does not exist in real life. Perfectly elastic body does not exist in real life. Body is a mixture of elastic and plastic. Plastic माने जोड़ा की stress पकेले भांगी जीवो. Elastic माने जोड़ा stress को पकेले तापर real position को पुनः return कर जीवो. जी बोल सकते हैं. For example, भाविदे से पेंटाच. सेन साइड को मोड़ियो. एके मोड़ियो तापर साइड को से रिटर्न कर जीवो. बेसी मोड़ देले कहीं जो भांगी जीव तो से जो पॉइंट रे भांगीला से पॉइंट रे से तार प्लास्टिक पॉइंट को रीच करियो सेति माने से भांगला अच्छा देखिए वर्क एनर्जी पर हम नेक्स्ट कांसेप्ट कौन है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सर की আছে ना स्प्रिंग फोर्स elastic potential energy stored in a spring force. Non-conservative conservative बुझ पेला कि अराउंड अ पाथ ऊपर डिपेंड कला नहीं खाली का ऊपर डिपेंड कला फाइनल और इनिशियल पोजीशन ऊपर डिपेंड कला ओके सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज अ स्प्रिंग फोर्स एग्जांपल बाबा को
ଟିକେ କହିଦବ କି के टाइम लगेगा 10 मिनट्स से वेट करिबे जदी हां भी केते ना एते अच्छा कॉल दो पहले काम कर ओके तो स्प्रिंग फोर्स को हमें कौन करबा देखो फर्स्ट ऑफ ऑल को हम पाके गोटे कह थिबो ना गोटे जगह थिबो जोडी के रिजिड हे थिबो बॉडीटा माने जोडी स्प्रिंगटा लाखिबो राइट जोडी को स्प्रिंगटा लाखिबो तापर आ गोटे ग्राउंड थिबो जोडी स्प्रिंगटा आगो पछ हो लेट से एटा मोर स्प्रिंग ओके एटा गोटे दी तीनटा स्प्रिंग बने पड़े एटा गोटे एटा हला कंप्रेस्ड एटा हला नॉर्मल आउ एटा हला एलोंगेटेड ओके तो हमर आगो मेन पोजीशन रखिया कोन रखिया मेन मेन माने जोठी नॉर्मली स्प्रिंग टा रहउछ तो एई पॉइंट रे हम स्प्रिंग टा करउछ नॉर्मली रहउछ एटा क्लियर ए पॉइंट रे हम स्प्रिंग टा करउछ नॉर्मली फाइन जेतले कंप्रेस्ड होछ तेले कोन होची तो जे जेतले कंप्रेस्ड होची कंप्रेस्ड हलाले कोन हो माने चिपी होबा ना लेट्स से एटा अछि ना कंप्रेस हे गेला ओए 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 केमते नेबी मु फोटो यार राइट एज यस so compressed now we need a position जोटी एटी कहीं जोए elongate समझ गया elongate करबा को माने एमसे रखबा ये तीनटा पॉइंट ओके ताले एटा मोर मेन पोजीशन ए पोजीशन टा को कोन कहबी मेन पोजीशन एटी मेन पोजीशन टा कोडी अछि एवडा एटी मेन पोजीशन टा कोडी अछि व्हाट इज दिस पोजीशन mean position mean माने normally mean position is what position जोटी normally मो स्प्रिंग टा रेस्ट करे किछ ना करे चिपा चिपे करियानी कंप्रेस करिवानी कि ये एलोंगेट करिवानी तो एटा कोन कंप्रेस्ड पोजीशन एटा कोन कंप्रेस्ड कंप्रेशन है सेट अब एटी कोन जी एलोंगेट तो तो पोजीशन चेंज करू एलोंगेट नॉर्मल पोजीशन तबे मते कथा को मु एटा को केते बडा कंप्रेस कले ता मेन पोजीशन रे त माने हमें स्प्रिंग रो मजीटा को धरिया बाबा हमें बॉडी स्टडी करना हमें कोन पॉइंट स्टडी करछे माने गोटे गोटे पॉइंट इमेजिन करछे जोडी तार सब तक मास कंसंट्रेट हे अछि हम स्टडी रे बॉडी टाइप पर पड़ो स्टडी गोटे पॉइंट है आगे पछ पूरा मन रख बॉडी स्टडी करना स्टडी करछे
point. It is a point of Odia. एडी आसला सो नाउ से एतिके बाट डिस्प्लेस करि एची पॉइंट टा एबे से पॉइंट गुडी आसला एडी नाउ से केते बाट डिस्प्लेस करि एची ना एतिके बाट डिस्प्लेस करि एची आगो तो ये भी x ता माने या भीतर केते पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हला से डिपेंड कला का माने पर केते फोर्स पड़ला डिपेंड कला का पर तुम केते बाट ताकू मूव करछु या भीतर भी केते या पर भी केते फोर्स पड़ला का पर डिपेंड कला ना केते बाट तुम ताकू मूव करछु तो आम फर्स्ट गोटे फोर्स डिफाइन करिया तो कौन कहबा स्प्रिंग फोर्स से स्प्रिंग फोर्स टा कौन हबो ना स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस मतलब जते आगु नगु साइड की ता स्प्रिंग फोर्स बढ़ी जो एते भी तू सते साइड की सते एलोंगेट को द स्प्रिंग फोर्स काय जो बढ़ी जो ता माने स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट x बाय डिस्टेंस केते एलोंगेशन बा केते कंप्रेशन इज how much x को how much is compressed how much length it goes for compression or elongation and जति के अधिक compression by elongation हो सेति के अधिक spring force हो एटा क्लियर होला फर्स्ट पॉइंट तो जदी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन था हम कोन कर परबो अच्छा आउ कहां पर डिपेंड करबो स्प्रिंग फोर्स टा ना स्प्रिंग रो मटेरियल कोथरो बनछि एल्युमिनियम आयरन कॉपर रबर प्लास्टिक कोथरो बनछि स्प्रिंग टा तापर मैटर करबो ता माने गोटे कंपोनेंट अछि जोडे की डिपेंड करबो कहा ऊपर ना x ऊपर आ गोटे कांस्टेंट रहबो कोन ना कोथरो बनछि एल्युमिनियम बनछि तो सेटा कांस्टेंट रहबो प्लास्टिक रू बनछि तो सेटा कांस्टेंट रहबो तो कांस्टेंट विल डिपेंड ऑन द मटेरियल कि को मटेरियल रू स्प्रिंग टा बनि दैट कांस्टेंट इज k दैट कांस्टेंट इज व्हाट तो F is equals to kx where k is the spring constant where k is the spring constant एटा क्लियर बुझि पाइलो एटा हला कोन मोर spring constant okay so now let us see how a spring elastic potential energy now we have to understand elastic potential energy हम बुझे चाहू छी topic elastic potential energy that means the amount of energy stored when the spring is compressed or elongated माने केते एनर्जी ता भीतर स्टोर हला जतले म तो कंप्रेस करली बा ताको एलोंगेट करली मोर क्लियर so when a spring is stretched or compressed a restoring force is developed due to elasticity which tends to bring the spring back to the original length ता माने एमती गलाले से क्वाड जीवा को चाहू छी ना याडे एमती गलाले से क्वाड जीवा चाहू छी ना याडे ता माने मीन पोजीशन आडी की से जीवा को चाहूची तो ये रिस्टोरिंग फोर्स जो को गोटे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हला ता भीतर स्प्रिंग भीतर राइट तो ता माने जत्ता बेले म कुछ कंप्रेस करिवि ताले ए रिस्टोरिंग फोर्स विरुद्ध रे करिवि भल से बुझबो जत्ता म कोन करिवि कंप्रेस करली सेताले मोटे रिस्टोरिंग फोर्स क्वाडी पड़ला राइट को अदले जत्ता एलोंगेट करले ताले रिस्टोरिंग फोर्स क्वाडी पड़ला लेफ्ट को तो जत्ता बेले मु कंप्रेस करूची ताले ए रिस्टोरिंग फोर्स विरुद्ध रे कंप्रेस करूची धर मु मीन पोजीशन रो x बाट आसली तो केते कंप्रेस केते मोर वर्क डन हबो ना ए रिस्टोरिंग फोर्स विरुद्ध रे त माने एंगल केते हला फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री अब ये रिस्टोरिंग फोर्स टा केते ना F इज इक्वल टू so this spring force is basically what force na restoring force because when the spring को किछि हमें छेड़खानी करने सेतले तो रिस्टोरिंग फोर्स नहीं छेड़खानी करले ही रिस्टोरिंग फोर्स आसीबो कोड ना तू जो डायरेक्शन मूव करछ तारा उल्टा डायरेक्शन मो तकले मेन क्वेश्चन को रिटर्न करिया बैंक ओके thus the energy possessed by a spring due to change in its shape is called as elastic potential energy so what is elastic potential energy energy possessed by the spring when it is compressed or deformed when it is deformed energy possessed by the spring by the spring when it is due to change in its shape but due to change in its shape ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି potential energy configuration जो ऊपर डिपेंड करे का ऊपर डिपेंड करे shape size position ये सब चेंज करले potential energy आसीबो राइट बट ओटा कंजर्वेटिव फोर्स दरकार potential energy आसीबा ପାଇଁ friction by potential energy आसीबो लूज हो एनर्जी मोर क्लियर एटा क्लियर अच्छा जदि मोर 1 न्यूटन रो फोर्स पड़छि ताले मते कहले k रो यूनिट का होबा हिसाब रे यदि 1 न्यूटन फोर्स पड़तो k रो यूनिट पछरछु k रो न्यूटन पर मीटर
के रो यूनिट कोन ना n by m न्यूटन पर मीटर। अच्छा जदि कहबी डायमेंशन को टिके मते के ml mt हाँ mt minus 2 very good। तो k रो dimension will be equals to force रो dimension divided by x रो dimension। force रो dimension mlt minus 2 divided by l, तो l कटी कौन मिलला mt minus 2। अच्छा और कौन सदी की तो तुमके बच्चे एक्सप्लेन स्प्रिंग कांस्टेंट क्वेश्चन आसीबो कौन एक्सप्लेन describe the spring constant when 1 newton force is applied to move the body by 1 meter, to move the body by 1 meter, then the force is equals to spring constant opposite। opposite force 1 न्यूटन थिला बेले 1 मीटर डिस्टेंस तो मूव करले सिर्फ जो वैल्यूटा मिलला मते सेटा ला स्प्रिंग कांस्टेंट सेटा चेंज हो भाबी दे हम कहबी ना एल्युमिनियम रखो तो एल्युमिनियम रो 1 न्यूटन फोर्स से केते बार तू मूव करि परछु सेम होबनी कपर अलगा रबर अलगा इमिति हम स्प्रिंग कांस्टेंट को डिस्क्राइब करले कि रिस्टोरिंग फोर्स 1 न्यूटन थिला बेले तू केते बार तो काणी परछु से भाबे डिपेंड करला मटेरियल ऊपर डिपेंड करे हल्का थे लूज थे ताले तो 1 न्यूटन फोर्स विरुद्ध अधिक बटाणी करियो और 1 मीटर आनिया पे अधिक फोर्स पड़ियो 1 मीटर नवा पे ताकू अधिक फोर्स पड़ियो फॉर एग्जांपल भाबे बहुत टाइट स्प्रिंग अछि 1 मीटर घुंचा पे बहुत अधिक फोर्स लागियो बट जदी हल्का स्प्रिंग अछि ताले 1 मीटर घुंचा पे कम फोर्स लागियो बुझि पछ केते एनर्जी स्टोर होला एटा मेजर करिया केमति चलो एन मेजर करा धर एटा x बाट आछि ना x बाट कंप्रेस करो कि रेस करो तो देखो f इज इक्वल टू कोन ना kx पहले डेल w चेंज इन वर्क डन केता हो चेंज इन वर्क डन f डॉट del x f डॉट del चेंज इन डिस्प्लेसमेंट तो कहीं जो f टा केते kx del x माने x2 minus x1 ना कोन x ना बराबर ना del x लिख दे बाय del x। अच्छा ठीक तो थीटा के तब थीटा 180 तमाने माइनस आसीबो एठी का आसीबो माइनस एलोंगेट कलर रिस्ट्रिंग पछकू तो डिस्प्लेसमेंट आगु कलु एठी भी 180 होला फ्रिक्शन बढ़िया बट फ्रिक्शन बढ़िया बट एनर्जी कंजर्व होची राइट धरो धरो या हला कि तुमर एठी थिला एटा रिलैक्स पोजीशन कि नै हमें जानिले धरो एटा स्प्रिंग धरो अब एठी जेतले थिला स्प्रिंग ता एठी थिला एटा हला x = 0 एटा कोन 0 माने मीन पोजीशन 0 माने एटा को पोजीशन मीन पोजीशन तापर तमे कोन करला ताको आनलो x = x बाटो केटा बाटो कोनला त माने ए पॉइंट ता हे गला x del x = x ओके तो जदि मु dx बाट आनिबी ताले कोन हो dx बाट आनिबी ताले कोन हो dw kx dx जदि ये टोटल वर्क डन मार करिए ताले इंटीग्रेशन ऑफ कोड को जाएंगे ए जगह रे x1 रु x2 बस 0 रु x ए जगह रे कोन हो 0 रु x यदि x1 नै थांती एटा x1 रु x2 ठीक तो पक्के तो केता केता बाहर पड़े आसो इंटीग्रेशन ऑफ x dx कोड को जाएंगे 0 रु x x dx का इंटीग्रेशन करो x2/2 कौन हो x2/2 कोड को जाएंगे 0 रु x जाएंगे माने बेसिकली kx2/2 तमने वर्क डन केता है
हाफ हाफ के एक्स स्क्वायर और जतिकी वर्क डन हैला सेतिकी एनर्जी स्टोर हितो ता भितर जतिकी वर्क डन तमे कल वर्क एनर्जी थ्योरम कोन होची जतिकी वर्क डन कल सेतिकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना नेट वर्क डन राइट ताले मु जतिकी वर्क डन एठी करथिबी सेतिकी ही एनर्जी हिसाब रे स्टोर हितो ता भितर बॉडी भितर सेतिकी मु विरोध रे नै कैसे भी ताले सेतिकी एनर्जी स्टोर होला तो अधिक वर्क डन करी अधिक एनर्जी स्टोर तो जति की वर्क डन एठी मु कली सेति कोन हो ना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी mu s is equals to w कोन लिखिबा mu s सॉरी us is equals to w कोन पोट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी us टा कोन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अरे ଗୋଟେ मेथड ଅଛି ଆମେ ग्राफिकली भी कर परिबो चाहिए बट ग्राफिकली करे खले ना तुमको ग्राफ बनाया पड़ो f is equal to kx रा करी ग्राफ केमती हम ग्राफ टा मते कहला f is equal to kx रो ग्राफ टा माने f रो x संगे ग्राफ टा प्लॉट करियो f रो का संगे ग्राफ टा प्लॉट करियो x संगे f रो संपर्क कोन x है तो ता माने ग्राफ टा को मिलिबो स्ट्रेट लाइन नाइस f is directly proportional to x ता माने what will you get if you draw a plot a graph between f and x na a straight line a straight line if this is your force and this is your x you will get a straight line now you want work done is f dot x ता माने a straight line under the area टा a straight line under the area टा work done so work done or elastic potential energy is given by the area of this triangle what is the area of the triangle half base into height तो बेस कोण हाइट कोण बेस हला x हाइट हला f तो us is equals to work done is equals to f dx fx dot x that is equals to fx na that is equals to area of the triangle OAB area of triangle OAB that is equals to half base into height sorry height को लिख लियो कौन f kx half x into kx you will get half kx square एटा ला कोन graphical method for the same thing simple अछि ना किछि नाही एतरे ऐसा नो अच्छा डन ओके तो हे गेला अच्छा तुम जदि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रे x सहित ग्राफ प्लॉट करियो माने केते एनर्जी स्टोर हो करियो बनी करिया पड़ियो एटा ला x ता माने x कोन गोटे 0 अछि और माइनस रे अछि गोटे प्लस रे अछि ता माने मते मझी रे प्लॉट टा करिया पड़ियो एटा हला इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ध्यान दबो एटा कोन mu us एटा मोर हला प्लस x एटा हला मोर माइनस x तो जदि तमे मेन पोजीशन थिला ताले इलास्टिक पोटेंशियल जी केते ना 0 ता माने मेन पोजीशन थिला पोटेंशियल जी कोन हबो 0 हो और जतले तमे याडी की बढ़िबो तो पोटेंशियल जी बढ़िबो याडी बढ़ो तो पोटेंशियल जी बढ़िबो किमिति बढ़िबो ना कि x स्क्वायर वाला बढ़िबो हाफ के x स्क्वायर वाला बढ़िबो ता माने 2 गले 4 3 गले 9 नहीं सॉरी डिवाइडेड बाय 2 4 रो स्क्वायर हला 16 16 बाय 2 8 ए वाला बढ़िबो राइट ता माने यू विल गेट सम माने एटी मैक्सिमम हो एपड़े एडे कोन हबो मैक्सिमम हो पोटेंशियल जी जति तमे x बढ़ेबो तति एनर्जी कोन हबो स्टोर हबो अधिक ताले तुमको कम मिलिबो ग्राफ टा एमती ना u yes बुझतुस
এই জায়গায় ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম এই জায়গায় মেইন পজিশন এটা কোন মেইন পজিশন এই জায়গায় কোন হাই আসছিল কাইনেটিক এনার্জি ম্যাক্সিমাম ছাড়লে কোন স্টোর ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক স্লো चलिए oscillation तो काइनेटिक एनर्जी का रास्ता बनो किंतु यार उल्टाटा এই জায়গাতে 0 এই জায়গাতে 0 এই জায়গাতে ম্যাক্সিমাম আমরা কিন্তু পারিব ক্লিয়ার स्प्रिंग फोर्स টা কনজারভেটিভ फोर्स चलो अच्छा गोटे फॉर्म ऑफ एनर्जी का गोटे फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट करे कोन करे गोटे डिवाइस दरकार खाली गोटे फॉर्म ऑफ एनर्जी का गोटे फॉर्म ऑफ किसी डिवाइस दरकार नहीं काइनेटिक को पोटेंशियल और डेटा को फॉर्म ऑफ एनर्जी मैकेनिकल अच्छा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कौन एनर्जी कैन neither be created nor be energy can neither be created nor be destroyed should right ready कर दो law of conservation of energy energy can neither be created nor be destroyed it can only be converted from one form to another form ता माने तमर जदी गोटे जगह एनर्जी 0 होछ ताले सेही एनर्जी समान हबो तमे देखियो सेटा को फॉर्म रे कन्वर्ट हिच धर मु कहली मोर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट गला हीट एनर्जी खाली हीट रे कन्वर्ट हिच को कन्वर्ट हिच तमे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूज्ड सेटा यूज करे तुम यूज केस यदि मु कहतली कि मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हला जति काइनेटिक एनर्जी कन चला को का चला हीट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो बुझे बच्चो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी सेम कांसेप्ट हम बुझे दी चलो तुम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो संपर्क बॉल टा ऊपर तळ को राइट ए जगह रे मैक्सिमम पोटेंशियल ए जगह रे मैक्सिमम काइनेटिक मझी टोटल एनर्जी टा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ए जगह रे टोटल एनर्जी टा पोटेंशियल संग समान ए जगह टोटल एनर्जी टा काइनेटिक संग समान now questions अछि questions करे पड़े mass energy relation is equal to mc square तापरे तापरे पढ़िया हां पढ़िबा हम कौन बुझे छ आइंस्टाइन कहले यदि गोटे बॉडी टे लाइट स्पीड से ट्रैवल करिवो तार मास बढ़ जे बढ़ी काहे बढ़िबो ना से एनर्जी अधिक प्रोड्यूस करिवो से एनर्जी टा मास रे कन्वर्ट हे जिवो माने मास टा एनर्जी रे कन्वर्ट हे पर एनर्जी टा मास रे कन्वर्ट हे पर mass और energy can be converted into each other ता माने ये mass अछि ये कोथरे कन्वर्ट करियो एनर्जी रे और एनर्जी कोथरे कन्वर्ट करियो मास हेलो हां 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 लिंक दो छु केमती हेइ छि मते टिके सैंपल बट तो घर पहुंचे तो देखि देबी हो तो हाँ एटा ही कथा तमाने कौन तमाने ये लाइट और स्पीड से ट्रैवल करिवो ताहले यार मास जति कि थिला नेक्स्ट टाइम असले के मास काहे तू बढ़िया ओके फर्स्ट पॉइंट द्वितीय पॉइंट सेमती काहे कि हला तम पढि पढि बोलसे एनर्जी रे भी दिटा नेचर अछि पार्टिकल नेचर वेव नेचर मास रे भी दिटा मैटर रे भी दिटा नेचर अछि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर so at some time when they are both traveling with the highest speed they can having the highest kinetic energy they can which is what speed of light or अधिक कुछ भी speed नहीं universal then which is impossible to achieve so as in but a microscopic particle can only achieve the speed of light macroscopic particle can never achieve speed of light तो जदि एमती हुए ताहले एनर्जी मास रा मास एनर्जी कन्वर्ट करियो आउट ऑफ टाइम डाइल्यूशन हो
मैंने भाभी दे हमें गोटे ट्रेन बनैले एमती ट्रेन जे कि पूरा एमती भाभी दे पूरा 8 4 बुलियो लाइट स्पीड न बुलले भी लाइट स्पीड पाखा पाखी जदी बुलला तो फ्यूचर को पहुंच यस मैंने भाभी दे तू सही भी 4 वर्ष रहिलो मास हाँ बढ़ियो बट एते भी नहीं स्पीड ऑफ लाइट रे गलो पाखा पाखी गलो बुलचुंती आर्थ चक्कर करछु से ट्रेन भीतर आर्थ 10 वर्ष पड़ेगा तो पे 4 वर्ष है you will reach future but you can never go back to the past it's same I mean your age is slowing down no because for you the time is different for you the concept of time is different you are conceiving time in a different way they are conceiving time in a different way so तांको पे 10 years थी तो पे 4 years complicated but you can never go back to the past के भी जाई परियो सेठी आसी गोटे grandfather paradox if you go back to the past and kill your grandfather then how you are born you will never be born because you killed your grandfather then how do you exist so ସେଇଠି multiverse ର concept ଅଛି if you go and kill your grandfather then the timeline in which you are not born will be created and universe will split itself to create a timeline where you do not exist and parallel universe पढ़ा right? That is why you can never go back to the past but you can look into the past how even today you can look into the past just going outside you know that's not correct empty you are looking at the stars are 10 light years 12 light years even 30 to 42 light years दूर hundreds of light years दूर ଅଛି light year माने कम light को गोटे बार से जीव गोटे वर्ष रे से केते बार पहुंचो light गोटे वर्ष रे जते बार पहुंचबो सेटा ला गोटे माने distance रे यूनिट है light year ता माने तू आज जो ताराटा देखु सेटा केते वर्ष तळर आसी तार जो लाइट 32 इयर्स तळर लाइट ता माने तू एबे जो लाइट ता देखलु सेटा केते वर्ष पुरना 32 इयर्स पुरना लाइट ता माने यू आर नॉट लुकिंग इनटू द पास्ट that means if by some teleportation we reach 100 light years ahead मैं हठात गोटे जागो पळा 100 लाइट दूर अछि सेठी जदि हम अर्थ को देखिले तले हमको अर्थ का 100 वर्ष पुरना अर्थ देखा जीवो एबर अर्थ देखा जीवो हला ना हां बोलर से थियो एमती एटा बुझिलो काम करो तुम क्वेश्चंस करवा स्टार्ट करो और डाउट्स आना मेजर फोकस है का एनएलएम का पूरा सार दबो मंडे तुम जेमती एग्जाम करो यहाँ पर फोकस करो यहाँ पर क्वेश्चंस करवा स्टार्ट करो यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चंस अच्छे स्पेशली एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर टफ एंड नाइस का पे वर्क एनर्जी बाप रे क्या पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बड़े आज क्वेश्चन एड विंड मिल अछि से विंड मिल रो गोट प्लेट एन जो होल छी बड़े आज क्वेश्चन अरे बाप एति की अछि आई गेस एति अछि so this is the amount of thing we are left with या पर कौन पड़ेगा हमें ग्रेविटेशन या पर रोटेशन मोशन अगर रोटेशन तब रोटेशन हो रोटेशन टाइम लगेगा रोटेशन इज लाइक इस स्कूल में पढ़ा हुआ है सॉलिड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड लिक्विड हां जानना हमें सॉलिड लिक्विड पढ़ दो क्या सॉलिड तो इजी है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इट्स अ डिफरेंट थिंग कितरे सॉलिड रे
हाँ फ्लूइड टा टिके अछि सॉलिड इजी अछि कॉन्सेप्ट तीनटा को अलग अलग जिनिस देख तू जदि ग्रेविटेशन पढ़िबू ताले सेथरा हम पढ़िया कोन कहलु गोटे अर्थ रो ग्रेविटेशन फील्ड टा ग्रेविटेशन आ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भितरे संपर्क ग्रेविटेशन टा बहुत छोट फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टा बहुत अधिक फोर्स हम भितर रिलेशन कर केते गुणा अधिक रिलेशन माने केते गुणा बड़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वितीय बारे पढ़िबू कि तू अर्थ भितरे जो छिड़ा है जो तो पर तू ग्रेविटेशन फोर्स टा पढ़ू सेटा केते माने रेडियस रो केते अर्थ रेडियस नु मपाव ना अर्थ सेंटर रू तो सेंटर सेटा केते तापरे एस्केप वेलोसिटी रो कांसेप्ट पढ़िबो एस्केप वेलोसिटी माने केते वेलोसिटी से तू गले अर्थ रो ग्रेविटेशन फोर्स को ओवरकम करके तू जाई पारी स्पेस राइट एबे आमे जिमि कम फ्यूल रे पठे दिलेनी जन को सैटेलाइट किमि पठेले आमे सेही कांसेप्ट एमती पठेले आमे माने कोन करले सैटेलाइट टाको एम छाडिले सेमती गला से रोटेट कला याडू पाखरे आ याडू दूर रे तमे इमेज रिवोल्यूशन टा बड़ होला इमेज रिवोल्यूशन टा पाखरे ने भाबे गोटे नट बोलछ ए तो जोर जाउछु पुनी साडे धीरे जाउछु जोर जाउछु नेक्स्ट टाइम पाथ बड़े दउछु हम जो सैटेलाइट टा छाडिले से किम छाडिले करू एमती पुनी एमती पुनी एमती एमती कर छाडिले कोडी मोन नहीं नहीं करबी हाँ नहीं स्टार्ट कर बुझल ते काट ताकू दे दिस सर मजा नहीं आ रहा है इसमें मजा नहीं आ रहा है ऐसा नहीं है जैसा हम सोचे थे दिस इज को पढ़वी Okay. New venture. I was working alone, na? I was working alone before, so this is my firm. You give it to someone. Promote me. What happened to your hair? Oh, भाई एड़ा तो भाई एड़ा तो सागवान पे था PhD कर सुने स्कूल ऊपर को जो ऊपर दे पानो पड़ गई जो एड़ा ऊपर दो चलो दैट्स इट से पार्टी पठेबो ग्रुप रे से क्वेश्चन छोड़ा पठेदो से करिया ପାଇଁ हां पूछ मंडे ना 3:30 रे 4:30 न्यूज़ मंडे दिन तो क्लास टा मोर एग्जाम हो मंडे दिन 70 मार्क्स खाली है हेलो तबरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एमती हबो कि न्यूमेरिकल्स पढिबो 60 आ 40 पढिबो 60 40 60 40
percentage. Percentage. Thank you bhai. अरे এইটা এটা পাগল ভালো तो এটা बहुत डार्क होते हैं हाँ भाई এটা तो এটা डार्क काहे करे पीएच एक्टिव है बहुत डार्क होते हैं लाइट करते हैं आयुष आयुष आज की डेट में ଗୋଟେ ନେବେ ଗୋଟେ ବଡ ରଖିଦା ଭାଇ ଦବୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଦା ସେ ଦେ ଦो तो सांगवान काहे करे तू कहां दे अच्छा आज हमर कोन इंग्लिश हां कर दो ते ट्राई करंदो स्वादी सारखा मते मु 8 टा स्टार्ट करबी और 9 टा सारबी देखि दो अरे पचालु बाबा को कोन आ करिया सेति कि ना अच्छा